Hello students, uh, welcome to the mathematics class. We have already started exercise 4.1. In previous class we discussed question number 1, in which we find whether a given equation is a quadratic equation or not by the comparison with the standard form. And what is the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. In second question of this exercise, we will convert a situation into quadratic form. Okay, we have a situation and we will convert this situation. And now, what is the question? Represent the following situation in the form of quadratic equations. Okay, first question is the area of rectangular plot is 528 meters square. What we have? The area of a rectangular plot. The length of the plot is one more than twice its breadth, and we need to find the length and breadth of the plot. इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, हमेशा कंपैरिजन होगा अगर, तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको हम फर्स्ट अपना वेरिएबल एज्यूम करेंगे. जैसे यहाँ पर लेंथ को कंपेयर किया जा रहा है ब्रेथ से. लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर है, तो फर्स्ट वी एज्यूम द breadth of plot be x meter. Therefore, by the given condition, length will be one more, that means plus 1 with the twice of breadth, which is x, so 2x plus 1 meter. Clear? Now what is given? The area of rectangle. We know that the formula for rectangle, length into breadth, and what is given? That 528 is the area of plot, and length 2x plus 1 and breadth in x. After simplification we get the required quadratic equation. Clear? In this type, what is the difference between the linear equation in a pair of linear equation or quadratic equation? Here we have an equation in the form of quadratic, that means the degree of equation is 2. And other thing, in the situation, sometimes we think that both conditions are same. कई बार ऐसा लगता है कि linear equation की फॉर्म में हम एज्यूम कर ले, हमने लेंथ और ब्रेथ को x और y क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है? एरिया, और एरिया में क्या होगा? प्रोडक्ट. तो जब क्वांटिटीज़ का या फिर वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होगा तो हमें किस फॉर्म में इक्वेशन आएगी? क्वाड्रेटिक फॉर्म में. तो ये आपको ध्यान रखना है, और एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे सेकंड एग्जांपल है, क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव. हियर अगेन व्हाट इज वी हैव? प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर? कंजुगेटिव यानी एक के बाद एक. जैसे अगर आप तुम फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर ले रहे हो 2, तो नेक्स्ट क्या होगा? 3, विच इज़ 2 plus 1. सिमिलरली फर्स्ट अगर तुम -5 ले रहे हो तो नेक्स्ट क्या होगा? -5 plus 1, विच इज़ -4. तो सिंपली वी एज्यूम द कंजुगेटिव इंटीजर बी फर्स्ट x एंड सेकंड विल बी x plus 1. एंड व्हाट इज गिवन? प्रोडक्ट x into x plus 1 is equal to 306. आफ्टर सॉल्विंग, very simple method, product, solve the brackets, x square plus x transpose of 306 minus 306, we get the equations. Clear? Next, Rohan's mother is 26 years old than him, and the product of their ages, again what we get? What we have? Product of their ages after 3 years. 3 years from now, that means after 3 years will be 360. We would like to find the Rohan's. First हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, डायरेक्ट गिवन है तो उसको एज्यूम करना है. अदरवाइज बताया था मैंने किससे कंपेयर किया जा रहा है? रोहन की एज से. उसकी मदर की एज 26 ईयर्स मोर है, तो वी एज्यूम लेट रोहन एज बी एक्स, देयरफॉर हिज मदर एज विल बी एक्स प्लस 26. आफ्टर 3 years रोहन एज विल बी एक्स प्लस 3 एंड हिज मदर्स एज एक्स प्लस 26 प्लस 3 विच इज एक्स प्लस 29. नाउ इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 years is 360. देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ दिस both x plus 3 into x plus 29 is equal to 360. After solving we get x square plus 32x minus 273 equal to 0. Clear? There is no doubt. Simple situations given होगी, वेरिएबल्स एज्यूम करना है अपने को, किसको क्या एज्यूम करना है, वही कंपेयर जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको x लेंगे और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेकंड अपने आप आ जाएगा, और फिर उनका प्रोडक्ट जो कंडीशन गिवन है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, सेकंड का लास्ट. अ ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, कम हो गई है. देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर. वो कितना टाइम ले रही है? 3 घंटे ज़्यादा ले रही है उसी डिस्टेंस को कवर करने में. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ओके, तो वही
स्पीड क्या एज्यूम किया, x किलोमीटर पर आवर, और एक 480 किलोमीटर में डिस्टेंस अपॉन टाइम, व्हाट वी गेट, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, व्हाट वी गेट, टाइम. Okay, therefore by the formula this time is equal to distance upon speed, 480 upon x kilometer x hours. Now in second condition the speed reduced by 8 km per hour, therefore the new speed of train will be x minus 8 km per hour, and the time increases by 3 hours, therefore this time the time taken by the train with the speed of x minus 8 km will be 480 upon x plus 3, time taken in previous case plus 3 more hours, and we know that speed into time is equal to distance, therefore speed x minus 8 and distance and time 480 upon x plus 3 is equal to 480. After solving this we get the required equation x square minus 8x minus 1280. Okay, when we solve these equations in the next topic, we have either direct the equations in the ax square plus bx plus c equal to form, or we have these type of situation. First we convert this situation into quadratic form, and after we solve by the given method. Okay, thank you. Stay home, stay safe.